औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाटा कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन। ओके, एरर चेकिंग मेथड, पैरिटी चेक, चैप्टर नंबर 2, ओ लेवल कंप्यूटर साइंस 2210। एरर चेकिंग मेथड, पैरिटी चेक, चैप्टर नंबर 2, ओ लेवल्स। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे कि वाई एरर चेकिंग मेथड इज़ इम्पोर्टेंट एंड देन वी विल डिस्कस one of its method that ensure that the data transmitted successfully and received successfully at destination and ठीक है without any error or problems. Okay, so start करते हैं हम. Next slide. Okay जी, error checking method. These are different methods that we are going to discuss. यहाँ पे हम पहले parity check को discuss करेंगे, फिर automatic repeat request है हमारे पास, then after that checksum and then echo checking. With the help of all these methods, we ensure that के data जो है successfully transmit हो जाए from short distance or for the long distance. ठीक है, और उसके अंदर जो इंश्योर करने के लिए कि डाटा जो है करेक्टली ट्रांसमिट हो जाए, वो विल यूज़ पैरिटी चेक, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, चेकसम एंड इको चेकिंग. एरर चेकिंग मेथड्स. ओके, ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन देयर इज ऑलवेज रिस्क दैट डाटा हैज़ बीन करप्टेड और चेंज इन सम वे. यस, जब भी आप डाटा ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम मोबाइल टू मोबाइल, फ्रॉम कंप्यूटर टू मोबाइल और कंप्यूटर टू कंप्यूटर, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि डाटा आपका करप्ट ना हो जाए कहीं रास्ते में, या हैक ना हो जाए. तो वो इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, एरर चेकिंग मेथड्स डिफरेंट यूज़ करते हैं कि डाटा सक्सेसफुली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए. एरर्स कैन बी अकर वाइल ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस. क्लियर? एरर उस वक्त जनरेट हो सकता है जब आप डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए. Why checking data is important? Why do we use error checking method? Okay जी, checking for error is important since computer aren't able to check that text is correct. They can only recognize whether a word is in their built-in dictionary or not. Okay, error checking method important इसलिए है कि कंप्यूटर जो है वो क्या नहीं कर सकता, वो टेक्स्ट को अनट एबल टू चेक दैट टेक्स्ट इज़ करेक्ट, कि टेक्स्ट जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ. वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है वर्ड्स को जो उसकी बिल्ट इन डिक्शनरी के अंदर हैं, सेव्ड होते हैं उसके अंदर. ओके, लुक एट द फॉलोइंग टेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास टेक्स्ट है और कंप्यूटर ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. यस, दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आप इसको स्क्रीन को क्या करते हैं, तो पास करते हैं, इस वीडियो को पास करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं क्लास के अंदर एक्टिविटी करवाने के लिए. ओके, आई एम गोइंग टू रीड दिस फॉर यू. ओके, कैन यू रीड दिस? बीइंग अ ह्यूमन आई कैन मेक सेंस ऑफ दिस but with some difficulty. Okay, can you read this? I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. Using the incredible power of the human mind, according to the research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and the last letter be in the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because the human mind doesn't read every letter by itself, but the word as a whole. Amazing, huh? Yeah. I always thought spelling was important. See if your friend can read this too. This text I have taken from the Cambridge book. Okay, computer science O level 2210, and this text has been taken from an online resource at the Cambridge University. ओके जी, वाई एरर चेकिंग मेथड इज़ इम्पोर्टेंट? क्यों जो एरर चेकिंग मेथड इम्पोर्टेंट है? यू प्रोबेबली हैड लिटिल प्रॉब्लम वाइल अंडरस्टैंडिंग द अबव टेक्स्ट. आप शुरू में तो देख के क्या रहोगे, यार ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ. ठीक है,
लेकिन इसके पीछे एक कंसेप्ट था, आपको ये बताना था कि एरर चेकिंग मेथड क्यों ज़रूरी है। कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, दैट्स वाई उसे सही करेक्ट आर्डर में लिखने के लिए हमें जो है कुछ मेथड्स चाहिए जो हम यूज़ करेंगे, जिस तरह पैरिटी चेकिंग मेथड है, ARQ है, चेक सम है और इको चेक है। वो यूज़ करके हम इंश्योर करते हैं कि डाटा जिस तरह हम सेंड कर रहे हैं एज इट इज़ हमें रिसीविंग एंड पे मिले और उसी सीक्वेंस के अंदर वो टेक्स्ट जो है असम्बल हो रीअसम्बल हो। कंप्यूटर वुड बी अनएबल टू मेक एनी सेंस ऑफ इट, यस कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जो टेक्स्ट हमने प्रीवियस देखा प्रीवियस स्लाइड पे। दैट्स वाई एरर चेकिंग मेथड इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये वो रीज़न है कि एरर चेकिंग मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है इन कंप्यूटर्स के अंदर। अब हम इसे चेक करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं पैरिटी चेक